Hi, beautiful people. Welcome back to my YouTube channel. This is me, guys, with Sanu, and you are watching Sun nonstop. तो guys, I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो है इमर्जिंग इंडिया के ऊपर वीडियो है। और इंडिया यार बहुत ही फास्टली जो है वो ग्रो कर रहा है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले शाउट आउट आज का जो है वो आज की वीडियो के अंदर जो है विक्की यादव, ठीक है। और इनको जो है वो ये सब्सक्राइबर हैं और इनका कमेंट जो है मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। अब तो मेरा भी नाम बोलना पड़ेगा अगली वीडियो में, नहीं तो यहाँ से भड़ामूस मिसाइल जाएगा। अच्छा, हमारी हमारी आर्मी जो है ना, हमारी आर्मी अमेरिका से भी ऊपर है। नहीं, देख दिए, मैं नहीं मानता। तुम लोगों को पता है ना, सारी जंगें हम जीते थे। और हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी। हम ये तो टट्टी है। कभी नहीं हारे, हम कभी नहीं डरते, हम कभी नहीं झुकते, ठीक है, समझ आइए ना। तो क्या है कि मिसाइल भेजोगे तो हम लोग डर जाएंगे? नहीं नहीं, हम लोग नहीं डरेंगे बिल्कुल भी। तो गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाइएगा और देखते हैं फटाफट से इमर्जिंग इंडिया और द राइज एज सुपर पावर। और भाई अमेरिकन भी जो है वो इंडिया की तारीफ करते हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट की वीडियो की तरफ चलते हैं और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This is India, the world's fastest growing major economy, expected to be the world's third largest economy by 2027, only behind USA and China. Currently, India is the fifth largest economy in the world, with a huge GDP of almost $4 trillion. And according to IMF, India is on the way to overtake Japan in the end of this year and will become the fourth largest economy in the world and second largest economy in Asia continent. India has already become the third largest economy in the world by PPP GDP, with a massive economy of 14,600 trillion. This year, India is going to grow with the impressive growth rate of over 7%, which is much higher than all major economies. India is not only the fastest growing major economy in the world, but also the world's fastest growing stock market. स्टॉक The मार्केट world's में भी आ fastest गए। growing real estate market, the world's fastest growing startups ecosystem, and home to the highest numbers of under construction mega projects in the world, spending over $1.9 trillion just on its infrastructure between 2018 to on the way 2025. India is improving its infrastructure rapidly, and due to the attractive business policies of the government of India, such as PLI scheme, big companies of the world are starting their production in India. The biggest example of this is Apple, which working on produce 25% of its smartphone production from India by the next year. India is the fourth most powerful military in the world and having the second largest active army in the world, with 1.4 million active military personnel. And the country is one of the few countries in the world that has lethal nuclear weapons. Also, India is modernizing its military at a very fast pace by spending 80 billion on its military, which make India the world's fourth largest defense budget. India is not only paying attention to its infrastructure and military, but is also paying equal attention to technology. India is one of the 4 countries in the world that have developed anti-satellite weapons. That means India has capability to destroy the communication system of any countries in the world by destroying their satellites in the space. An Indian space research organization has successfully launched over 435 foreign satellites for 36 different countries, including satellites of USA, Germany, France, UK, and मैं दरवाजा ओपन करके आती हूँ। अभी डोर ओपन करके आई हूँ, थोड़ा पता नहीं, लाइट आज बहुत ही तंग कर रही है। Russia. India has become the first country in the world to reach Mars in its first attempt and become the first country in the world to successfully land a spacecraft on South Pole of the Moon. And did you know that India has created an incredible record by successfully launching 104 satellites by a single rocket? Last year, India has overtaken China and now become the most populous country in the world with the world's largest young force. यंग More लोग than भी वहाँ पे 50% ही of हैं। its population below the age of 25 years, and this young force is starting their business, due to which India has become the world's largest and fastest growing startup ecosystem. Today, with over $900 billion industrial output, India is among the world's top 5 most industrialized countries. Big companies of the world and Indian companies are starting their production in India.
due to which India is now becoming the manufacturing hub of the world. Last year, India had total exports of $776 billion. And the way the industrial growth is visible in India, by 2030, India's output is expected to be more than $3 trillion, and export is expected to be $2 trillion, which will make India the third largest exporting country in the world after China and USA. Due to this, India's impressive growth, the wealth of the people of India is increasing very fast. Today, with a wealth of $18 trillion, India has become the fourth wealthiest country in the world. And the way India's wealth is increasing, by 2030, India's wealth will cross $30 trillion, which will make India overtake Japan. Will become the third most wealthiest country in the world after USA and China. The way India's economy and wealth is growing, not only the people of India, but also the big companies of the world are investing in India's stock market. Due to which today, India's stock market is the fastest growing major stock market in the world. In just last 1 year, India has overtaken France, UK and Hong Kong, now become the world's fourth largest stock market with a market cap of more than $5.2 trillion. And according to IMF, the size of India's stock market will be more than 11 trillion by 2030. Then India will overtake Japan and become the third largest stock market in the world after USA and China. India, the world's fastest growing major economy, the world's fastest growing major stock market, the world's fastest growing real estate market, and the world's fastest growing startup ecosystem is expanding at an annual rate of 7%. Already the fifth largest economy, it will rank third by 2027 after USA and China. Will it become a superpower? सुपर पावर भाई बनने में उनके जो है ना बहुत ही ऐसे थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी वो सुपर पावर पे जो है वो बन जाएंगे। और पाकिस्तान के हालात तो तुम लोगों को पता है ना, सुबह की कुछ 70 दफा जो है ना यहाँ पे लाइट जा चुकी है, आती है जाती है, घंटा आती है 5 मिनट रहती है, फिर घंटा जाती है, फिर 5 मिनट रह जाती, पता नहीं क्या लाइट ने बेड़ा गर्क जो है ना वो किया हुआ है काम। हम फिर क्या करें, फिर ऐसे काम करते हैं अंधेरे में ही, देखो तुम लोग, और क्या जो है वो फिर कर सकते हैं। बाकी इंडिया का एक मिसाइल अगर चला जाएगा ना ऊपर हवा में, तो जमीन पूरी का जो है वो जिसे कहते हैं ना नेटवर्क की, पूरी दुनिया का जो कनेक्शन है नेटवर्क का, वो भी काट सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है। और रियल स्टेट मार्केट में भी भाई, स्टॉक मार्केट में भी वो जो है वो आगे जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, रैपिडली दूसरा तीसरा उनका नंबर है हर कोई ऐसी मतलब चीज के अंदर, जो मतलब अमेरिका और चाइना आगे है ना, बहुत जल्दी चाइना को पीछे करेगा, आगे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका रह जाएगा, उसको पीछे करेगा, फिर आगे आएगा इंडिया। तो इंडिया का जो है ना वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान, आई थिंक सो कि अगर सब कॉन्टिनेंट होता, हम लोग भी उनके साथ ही होते, हम लोग जो है ना वो अलग ना हुए होते, तो आज हम लोग भी फख्र से कहते यार हम लोग सुपर पावर है। अब तक तो बन जाते हम लोग सुपर पावर। तो ये था कि बट पाकिस्तान अलग हुआ और फिर पाकिस्तान के मंदे दिन शुरू हो गए। पहले हम लोग आगे थे, पता है, इंडिया से हम लोग आगे थे जब नया नया पाकिस्तान बना। फिर उसके बाद ऐसी करप्शन पाकिस्तान के अंदर हुई, पता नहीं क्या हुआ, तो उसके बाद डाउन 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 होते बहुत ही हम लोग डाउन हो गए। अब इंडिया बहुत आगे जा चुके हैं हमसे। अब तो क्या कहते हैं कि हम 10 साल मेहनत दिन रात भी करेंगे तब तक भी जो है ना उनके लेवल तक जो है ना वो पहुंच नहीं पाएंगे, बिकॉज वो इतना रैपिडली और इतना फास्टली ग्रोइंग करे। जब तक हम मेहनत करेंगे, उनका 1 नंबर पार करेंगे, वो 10 नंबर और आगे चला जाएगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।